I'd like to wish everybody welcome back to the session two, which will be about legal skills for young lawyers. We have an esteemed panelist of four speakers who are very well, um, who are very experts in, especially in this topic of legal skills. I have my co-moderator with me, Najamuddin. Najam, would you like to introduce yourself? Sorry. Would you like to introduce yourself? Okay. Shall I start Yes. immediately? Okay. Assalamu alaikum. My name is Najam, and today we have the session. We will discuss core lawyer skills you need and how exactly you can work on them. So, your education and training are crucial for your success. To become a good lawyer, you must know the law. To become a great lawyer, you must possess those skills to how to use those laws and how to implement those. Working in law naturally requires some certain skill set, especially if you want to become a good, great, successful lawyer. So, first of all, I would like to introduce our panelists. First of all, I would like to welcome Barrister Mohammad Qayyum. He's a leading advocate based in Lahore and a member of Punjab Bar Council. He has more than 17 years of experience in the legal profession. He's a the third generational lawyer and a managing partner of Qayyum and Associates, and he is definitely a professional. So then we have with us Barrister Ahmad Ziauddin. He's a Dean of Dale Academy for London Examination. He is heading a Sir Law Islamabad office, which is a leading law firm in the country. He has previously also experience with the Law and Justice Commission of Pakistan, an apex body that recommends law reforms in the country. And he has also worked with the Office of the Attorney General of Pakistan. Then we also have, I would also welcome Barrister Saad Bajwa. He's an associate in the corporate team at Clyde & Co. He is part of the corporate practice. He has worked with joint ventures, initial public offering, corporate restructuring mergers and acquisitions, and he's also a contributor to the Express Tribune. Then we have Ms. Cortelian Nasir with us. She obtained her LLB from University of London. She is currently the coordinator for BBP programs and a lecturer at Roots IB College. She is have an area of expertise in family law, especially in juvenile and domestic violence. She possesses strong commitment to team environment dynamics and with the ability to contribute expertise following leadership directives. So these are our panelists today, and we welcome you all. So then I would like to hand over the discussion to Ms. Shafaq Farooq, and please kindly, Shafaq Farooq, introduce yourself and kindly start the session. Shafaq, I'm really sorry, but you're not audible. We can't hear you. No, you have muted your mic. Can you please unmute and check? Maybe join again because you're not audible. No, I would request you to rejoin the session. I think because of this whole COVID, we all have become very equipped with this technology and we all have to face these struggles. I'm really sorry for the inconvenience. And until she joins back, I'll be co-moderating with Najam. Thank you very much, everyone, for being here. I think it's a very important and significant topic that we'll be talking about, and I wouldn't wish for a better panel than this. So my first question would be, with regards to the a little bit of the academic studies and the gap between practical and the academia. So, what we study in law schools, a lot of times I have heard in my classes and from my senior that, abhi to pad rahe ho, when you guys will go to the practical field, everything will be very different. Kitabon se bahut different hai sab kuch. So, when a student is studying, especially in law school, there is a very big gap between the practical implementation of the law and the text that we study. So, what do you think? What do you suggest that should there be any change in the academic curriculums, or what steps can a student take to ensure that
उसको लीगल स्किल्स का भी उतना ही पता चल रहा हो जितना उसे एकेडमिक और उसने टेक्स्ट बुक का पता है. So firstly, I would like to ask this question to Mr. Mohammad Ahmed Qayyum. So जी देखिए, इन सो फार एज आवर एजुकेशन सिस्टम इज कंसर्न्ड हियर, आई मीन वो भी सारे के सारे आपस में डिवाइड हुए हुए हैं. यू गॉट द एक्सटर्नल प्रोग्राम, यू गॉट द लोकल प्रोग्राम. मसले दोनों के दोनों सिस्टम्स के अंदर हैं, और दोनों की अप्रोच जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर देयर एकेडमिक डिग्रीज, राइट? I mean, if you do the external program, your language skills might be better, and your ability, but you do everything in English, and you do better research. आप ज़्यादा intensive काम करते हो. However, you have absolutely no knowledge about Pakistani law at all. अगर आप एक्सटर्नल प्रोग्राम कर रहे हो. ऑन द अदर हैंड, अगर आप लोकल डिग्री कर रहे हो तो आपके लैंग्वेज स्किल्स वगैरह इतने ज़बरदस्त नहीं होते, इतना आपको थारोली नहीं पढ़ाया जाता है. योर लैंग्वेज स्किल्स और आपकी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह उसके अंदर से ज़्यादा काम करने की, इट्स ईजियर टू पास LLB हेयर. वही सारे के सारे स्किल्स पढ़ने लिखने के वकालत के अंदर इस्तेमाल होते हैं, मगर फंडामेंटल जो स्किल है वकालत के लिए is to get whatever your client wants from the judge. You have to come up with a solution for him. वो तो आपका यहाँ पे सिस्टम के अंदर एजुकेशन में है ही नहीं. आपसे एसेस लिखवाए जाते हैं, आपके स्किल्स और ज़्यादा लिखाया नहीं जाता, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है वंस यू गेट थ्रोन इनटू द प्रोफेशन आप अचानक अच्छा बोलना भी सीख लेंगे, अच्छा पढ़ना भी सीख लेंगे, और उर्दू भी पढ़ना शुरू सीख लेंगे कि जो ऑर्डर शीट्स वगैरह नीचे सिविल कोर्ट पे हो रहा है, और ये ऑटोमेटिकली यू पिक अप. नाउ पाकिस्तान का जो सिस्टम है लीगल, जो भी जिस नौयत का भी हो, आई थिंक इट्स अटरली फेल्ड. Probably the most useful degree I've done in my life was bar ki degree, and precisely because it was not it's a vocational degree. It was not about academics at all. आप LLM कर लें, जो मर्जी वगैरह कर लें, एकेडमिक सिस्टम आपको एकेडमिक्स ही सिखाता है, and the profession unfortunately or fortunately is entirely practical. So it's all about you being able to write, you being able to focus because I mean पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन अगर सिस्टम देखें तो मज़ामीन और जो सवाल लिखे जाते हैं देयर हेडिंग्स हैं कि नहीं, देयर मेंशन्ड बाय, आप लेंथ के ऊपर नापते हैं या कोई, और जो सवाल वगैरह, इट्स नॉट अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. मैं यहाँ पे दफ्तर में बैठा हूँ, एवरीथिंग इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. everything is not about what I know, what's in these books behind me. It's all about वो जो जज बैठा हुआ है उसको मैं कैसे कन्विंस करूंगा. सो एकेडमिक्स का टारगेट मुकम्मल तौर पे फ़र्क होता है, थोड़ी सी आपकी बेस वगैरह बना दिया जाता है, बट इन सो फार एज व्हाट इट हेल्प्स प्रोफेशन के अंदर जो है मेरे ख्याल में 10-15% ही सिर्फ फ़ायदा वगैरह होता है, वट एवर यू कम टू फ्रॉम योर जो द वेरियस डिग्रीज. सो आई मीन I guess I've answered your question, but that's principally what I'm trying to do at the bar council as well. Try to introduce something, ये skills वगैरह develop करने के लिए lawyers के लिए bar vocational course type की कोई ना कोई चीज़. कॉलेजेस में भी आपके सिलेबस में कम से कम आखिरी सालों में ये होना चाहिए. सिर्फ साल में एक मूट नहीं होना चाहिए. People need to be taught how to argue. People need to be taught how to. I mean, it needs to be an ongoing thing. और जो चीज़ आपके सिलेबस में प्रोवाइड नहीं हो रही है वो स्टूडेंट्स को इन हाउस करके, खुद करके, क्लब्स वगैरह बनवा के या इंटर्नशिप्स के थ्रू एक्सपीरियंस हासिल करके करना चाहिए. सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Yeah, thank you very much. That certainly does answer my question. Now, I would ask the same question to Mr. Saad Bajwa, if you would like to add something to it. Sir, can you please kindly unmute your mic? Yes, apologies for that. So, Assalamu alaikum everybody, and it's a pleasure to be here. Yes, I would like to add to what Mr. Mohammad Qayyum has said. The thing about the legal profession is that, and I'll give my own perspective on it. I joined the legal profession about 7-8 years ago without having anybody in my family of a legal background. So for me, it was a big jump, and I'll tell you why. The reason is because when you go to a medical school, let's just take the example of a medical school. The type of instruction that you're given, जिस तरह आपको पढ़ाया जाता है, उसमें mean and ends वाली एक circumstances होती हैं. So for example, अगर आप गए मेडिकल स्कूल में तो आपको certain diseases का भी बताया जाएगा apart from the
academic side of the medical studies कि जी asthma है तो उसके ये symptoms है, उसको इस तरह treat करना है. The thing about the legal profession is, as Qayyum साहब said, जो हमारी qualifications हैं वो purely academic हैं. And the moment you have your LLB in your hand, उसके बाद आप बिल्कुल at sea हैं and आपने आके on job, on site आपने सब कुछ सीखना है. So the thing about the legal profession is that our knowledge is actually a consequence of our experiences. So that is what the first 3-4 years of a legal practitioner looks like. मैंने इसमें ये देखा है कि just as Qayyum साहब said, पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये है कि there is a dearth of professional qualification associated with the legal profession. मतलब हम LLB कर लेते हैं तो उसमें at best we are taught how to read the law and understand the law. We are not taught how to practice law. And there is a certain skill set which I think everybody requires when they have to enter this profession. Certain competency based on your oral advocacy, certain competency based on your written advocacy. ये चीज हमारी lacking आ रही है इस वक्त. मैंने अगर किसी को advice देना हो कि जी on your first 6 months of your legal practice आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, I think उसमें 6-7 मेन चीजें जो कि एक बंदा खुद से एफर्ट करके उसको डेवलप करके उस लेवल तक पहुंच सकता है. इसमें सबसे पहली चीज है ड्राफ्टिंग. अब ड्राफ्टिंग बंदा सीखता किसी और सीनियर से ही है. कोई भी बंदा जब भी ड्राफ्टिंग करने आता है, अनलेस उसने बार किया वो इंग्लैंड से, जब पाकिस्तान में वो किसी चेंबर को ज्वाइन करता है तो उसको ड्राफ्टिंग ऐसे नहीं आती, उसको सिर्फ लिखना आता है, पैराग्राफ्स में आंसर्स करना आता है, ऐसे जिस तरह कय्यूम साहब बता रहे कैसे लिखने आते हैं. ये चीज आप एक्वायर करते हो रीडिंग से. जब आप किसी की पिटिशन पढ़ते हैं, जब आप किसी के सबमिशंस पढ़ते हैं, जब आप किसी की नोट्स पढ़ते हैं, उससे आप ऐसा ऐसा खुद भी एक्वायर करते हैं ड्राफ्टिंग. दूसरी चीज होती है कि बेसिक ओरल एडवोकेसी स्किल्स, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जी जजमेंट कैसे लेनी है, ठीक है, आपने स्टे ऑर्डर के ऊपर किस तरह जाके बहस करनी है जज के सामने, क्या चीज कहनी है, क्या चीज अवॉइड करनी है. एंड अगर तो आपके पास बेनिफिट है कि आपने बार किया हुआ है तो आपको एक बेसिक क्रॉस एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन इन चीफ भी आएगा. लेकिन अगर नहीं किया हुआ तो 2 या 3 हियरिंग के बाद आपको एक जनरल आइडिया आ जाता है. तीसरी चीज जो मैं कह सकता हूँ जो कि हर बंदा कर सकता है, हर बंदा कर सकता है, बट उस पर थोड़ी सी एक लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहिए होती है, वो होती है आपकी ड्रेसिंग एटिकेट एंड प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन. नाउ दीज आर एरियाज जिसको जो कोई भी अपनी एफर्ट से कर सकता है. ये आपने कहीं लॉ स्कूल में सिखाएं या ना सिखाएं, आपने काला कोट कैसे पहनना है, आपने प्रेजेंट अपने आप को किस तरह करना है जज के सामने, क्लाइंट के सामने, विद इन द वाइडर प्रोफेशन इटसेल्फ. ये चीज एक यंग लॉयर को शुरू से ही पता होनी चाहिए. 25-26 ईयर्स की एज में ही शुड नो, ही और शी शुड नो कि जी मैंने अपने आप को प्रेजेंट किस तरह करना है. एंड चौथी चीज ये होनी चाहिए कि आपने क्लाइंट के साथ एक्सपेक्टेशन किस तरह मैनेजमेंट करनी है. नाउ अब ये ऐसा स्किल है जो कि a lot of lawyers, I mean I'm still learning it, बट इसके कई बेसिक्स हैं. वो ये कि आपने क्लाइंट के साथ एंगेज रखना है अपने आप को, आपने टर्न अराउंड करना है टाइम पे. अगर तो क्लाइंट आपका ईमेल्स के ऊपर आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करता है तो आपने उसको टाइम पे जवाब देना है. आपने उसको बेसिकली यू डोंट हैव टू लीव पीपल हैंगिंग अराउंड. अगर उनका आपके साथ फोन के साथ राब्ता है, आपके मुंशी के थ्रू राब्ता है या आपके पार्टनर के थ्रू राब्ता है, तो आपने उस चैनल के थ्रू ही उसको एंगेज रखना है. एंड लास्टली मैं यही कहूंगा कि जस्ट टू सम इट ऑल अप, ये सारा प्रोफेशन है जिसमें आप देख के सीखते हो. वो काम तो आप देख के सीख ही रहे हो, अपने सीनियर से देख रहे हो और उनसे सीख रहे हो, लेकिन साथ साथ अपनी एफर्ट और अपनी कमिटमेंट होनी चाहिए. एंड थोड़ा सा खौफ अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि एक रिलक्टेंस टू मेक मिस्टेक्स इज आल्सो अ वेरी बिग बैरियर एंड अ वेरी बिग हिंड्रेंस टुवर्ड्स लर्निंग. वो निकल जाना चाहिए. शुरू में थोड़ा सा आपका जो है ना वो हेजिटेशन उतर जानी चाहिए जब आप प्रोफेशन में आते हो. लेट्स से अगर आपने लिटिगेशन करनी है या अगर इवन आपने अगर कॉर्पोरेट काम करना है, तो the very fact that you're junior, you're starting out as a junior, you have a room for making mistakes because you know somebody superior, somebody more senior than you will be looking at your work before it goes out more often than not. So never be afraid to make mistakes. But ये 4-5 basic skill sets हैं जिसके ऊपर आप in the first 6 months of your practice after your LLB you can work on. And just to sum it all up once again, एक ड्राफ्टिंग है, आप देखें कि क्या क्या चीजें किस तरह लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं. ओरल एडवोकेसी स्किल की बेसिक चीजें आप पिकअप करें जब आप किसी को शेडो करें कोर्ट में.
एंड अपना ड्रेसिंग, अपना प्रोफेशनल एटिकेट वगैरह आप अच्छा रखें. यू शुड लुक द पार्ट. एंड क्लाइंट्स के साथ किस तरह मैनेज करना है, उनको एंगेज किस तरह करना है, ये 4 चीजें आपको शुरू में पहले 6 महीने में आपने करनी है. उसके बाद फिर ये प्रोफेशन ऐसा है कि आप देखते देखते ही सीखते जाते हो. आपकी इजाज़त से मैं एक चीज़ के ऊपर ज़रा थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा जो बाजवा साहब ने कहा है. अगर ये ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप देख के सीखते हैं. इस प्रोफेशन के अंदर ये स्किल्स की हम बात करें करके सीखते हैं. सो जी अगर जी आपने करना है किसी के ड्राफ्ट देख के, अनलेस ही ड्राफ्टिंग की किताब है या मेरी आपने 15 फाइलें पढ़ ली हैं या मुझे आपने परफॉर्म करते हुए अगर देख भी लिया है, माई दे आर नॉट गोइंग टू लर्न दैट मच जब तक वो अंडर प्रेशर खुद उनको करना नहीं पड़ता. सो अगर स्किल्स की बात हो रही है तो आई थिंक ये सिर्फ ये कह देना कि ड्राफ्टिंग पढ़ लेना, दैट्स नॉट गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट. और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ये इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है. ड्राफ्टिंग करवाएं, लिखने की आदत पढ़वाएं, बोलने की जुबान की गिरा खोलें, तो फिर ही होगा. इट्स नॉट जस्ट कि जी देख लिया तो बहुत ज्यादा. वो मेरे दफ्तर में बेशुमार किताबें हैं वगैरह, बट इट डजंट नेसेसरली फॉलो कि सारे बंदे ही उनको देख के बहुत अच्छे तरीके से वकील बनेंगे. आई एम सॉरी बाजवा साहब, जी बाकी चीजें सारों से एग्री करता हूँ. आई होप यू जी जी ऐसे ही है, डोंट ऐसे ही माइंड. है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. देखना अलग बात है और उसको करना अलग बात है. तो आई थिंक एक एस्पेक्ट आपके अंदर होना चाहिए कि आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें शुरू में कि जी चले, मुझे गिव मी अ चांस कि मैं भी ड्राफ्ट करूं. करना शुरू करना चाहिए, लिखना चाहिए. जी जी Yeah, thank you very much about this whole answer. And I think कि legal drafting तो हमें law school से शुरू हो जाती है कराना कि we learn how to draft things, but the practical implementation and how we do it is once we go into the practical field तब हमें इस बारे में ज़्यादा पता चलता है. I would like to go to Mr. Amar Ziauddin about the same question if he wants to add something. Thank you so much, and it's an absolute pleasure to be on this panel with people like Qayyum Saab, Bajwa Saab, and Kurutulain. I think बहुत डिटेल में बात हुई. मैं सिर्फ दो एस्पेक्ट्स पे एक्सपैंड करूंगा. एक कयूम साहब ने अलूड किया एंड वन ऑफ बाजवा साहब. कोर स्किल्स साथ में आपको आइडेंटिफाई करके बताई. एक स्किल और ऐड करूंगा रिसर्च की. I think it's very important for young lawyers or young students who are going to be lawyers very soon to know how to develop to sort of apply themselves on research and eventually improve their research skills over a period of time. क्योंकि उसी से आर्ग्यूमेंट या सबमिशन फॉर्मुलेशन भी निकलती है. सो वंस यू इम्प्रूव योर रिसर्च स्किल्स, देन यू आर एबल टू improve your arguments or your submissions as well. Then you're able to introduce those spins that experienced lawyers like Qayyum Saab bring on given set of facts and the law applicable. दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज जिसकी कयूम साहब ने जिसका जिक्र किया वो है रोल ऑफ बार काउंसिल. आप अमेरिका के किसी भी टॉप टियर लॉ स्कूल को देखिए तो उसमें आपका जो करिकुलम है वो बहुत ज्यादा रिगरस होता है इन टर्म्स ऑफ कोर स्किल डेवलपमेंट. जिस पे एंड दिस इज वेयर आई डिसएग्री विद यू गजाल, इट्स नॉट ट्रू फॉर एवरी लॉ स्कूल अक्रॉस द कंट्री. हमारे जो बार काउंसिल्स ने जो करिकुला प्रिस्क्राइब किया हुआ है बेयर मिनिमम एंड एवरी लॉ स्कूल कैन ऐड टू इट, वो बहुत ज्यादा आसान है. विच इज वाई कयूम साहब सेड दैट इट्स इजी टू बिकम अ लॉयर इन पाकिस्तान एंड इट्स ईजियर टू क्वालिफाई एज अ लॉयर इन पाकिस्तान. दैट इज गेटिंग इनटू अ प्रोफेशन इज आल्सो वेरी इजी. उसको भी मुश्किल बनाना चाहिए. लेकिन आपकी ये जो कोर स्किल्स हैं आपके आखिरी 2-3 सालों में इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, आपके निसाब का हिस्सा होना चाहिए, ताकि ये जो डिस्कनेक्ट है जो हम सारे अग्री करते हैं, आपका एक्सटर्नल सिस्टम फ्लरिश इसलिए कर रहा है क्योंकि आपका लोकल सिस्टम फेल हो चुका है. आपका लोकल लॉ सिस्टम अच्छा हो, आपके एक्सटर्नल जो स्ट्रीम है उसकी नेसेसिटी रहेगी नहीं आपके माशरे में. तो आपकी कोर स्किल्स का जो एस्पेक्ट है वो आपके निसाब का हिस्सा होना चाहिए. उसी वक्त उसको डेवलप करना चाहिए. देखें, कोर्ट रूम एडवोकेसी जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है और ये स्किल है, ये डेवलप की जा सकती है. जस्ट बिकॉज you're a gifted public speaker does not mean you'll be a good litigator also.
इसमें कयूम साहब ने शुरू में जिक्र भी किया था, यू नीड टू नो व्हाट अ जज वांट्स। सो आपको वक्त के साथ जज की इंक्लिनेशंस का पता चलता है, उसकी पास जजमेंट्स का पता चलता है, आपको पता होता है कि क्या आर्गुमेंट करना है, क्या नहीं करना, किस तरह करना है। दिस समथिंग दैट यू लर्न विद एक्सपीरियंस, बट यू नो वन mooting competition will not really egg on this process of learning. तो निसाब पे फोकस करना चाहिए, और मैं ये एक एडिशन करना चाहता था in addition to what was said already. Yeah, thank you very much for being so thorough about the research and about advocacy as well. I would like to take a female's perspective on it as well. So, Ms. Kuratul and Nasir, if you could just add to the topic as well. Assalamu alaikum everyone. I hope all of you can hear me. First of all, I would really like to appreciate this initiative YGA का जो especially skill learning और legal skills के लिहाज से जो इन्हें start किया है, and ये वैसे as you can see it's a male dominated profession as I was given my turn at the end. लेकिन ये है मैडम कि का फॉल्ट है। सबसे बड़ा जो मुझे अभी तक फेस हुआ है वो यही है कि देयर इज अ बिग जेंडर गैप। लाइक इतना ज्यादा लीगल स्किल्स में लर्निंग में इतना गैप नहीं जितना जेंडर गैप है। एंड सेकेंडली because I have been part of like I have been teaching law as well as practicing, so I can really feel that the gap that exists between the learning and the practice. Because teaching external law degrees मैंने खुद भी पढ़ी हुई है और जो स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाई हुई है, when they graduate, because मेरे साथ जितने भी मेरे क्लास फेलोज थे या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनमें से रेशो बहुत कम है who actually pursued law. फीमेल्स की तो रेशो आप साइड पे ही करते हैं, उसमें तो 2-3 होती हैं, लेकिन इवन जो लाइक प्रैक्टिस कर रहे हैं and who are actually happy with what they are doing, it's very low. और इसी चीज को हम लोगों ने ध्यान में रख के काफी देर से हम लोग लाइक खटानाज लॉ चेंबर ने तो काफी देर से इनिशिएटिव लिया हुआ है, एंड मोहम्मद अहमद कयूम साहब हैज बीन पार्ट ऑफ इट एंड ही वाज आवर एस्टीम्ड ट्रेनर एज वेल, बिकॉज वी रियली वांट कि जो पाकिस्तान का सिस्टम है इसके अंदर all over the world, as you can see, जो the economy and जो भी education system है, it is moving towards skill based learning, project based learning. Even schools में, school से लेके colleges तक अब जो skill based learning है उसको बहुत ज़्यादा promote किया जा रहा है, because at the end this is what you actually want from your profession, कि आपको कुछ आए, आप उस सीख क्या रहे हो, right? तो पाकिस्तान में ये gap बहुत देर से और अब जाके if all of us are actually talking about, this is the first step जो हम लोग ले रहे हैं इस चीज में, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा गैप है, एंड द वर्क which needs to be done is supposed to be done by the bar councils, which all of us are actually doing it through this platform. तो ये जो चीज है इसके लिहाज से मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत बड़ा गैप है, और इसको फिल करने के लिए we have had a lot of trainings. हम लोग 3 साल से कोर्स स्टार्ट किया हुआ है and we have trained a lot of law students in this. लेकिन फिर भी जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बार काउंसिल्स ने लेगी और लॉ कॉलेजेस में वेदर लोकल एंड एक्सटर्नल ये प्रैक्टिस की जो इन्वायरमेंट है कि बिकॉज एट द एंड व्हाट वी वांट इज कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल लर्निंग इज डिफरेंट, बट प्रैक्टिकल ही होगी तो हम वी कैन एक्चुअली एक्सेल इन आवर प्रोफेशन. तो ये it starts from advocacy, as you've mentioned earlier. It starts from advocacy, client conferencing, because people generally in Pakistan don't even know how to actually deal with a client. You don't know the basics कि जब एक बच्चा ग्रेजुएट होता है उसको ये नहीं पता अपनी लॉ फर्म में या किसी के साथ काम करना है, तो एक्चुअली उसके पास जब क्लाइंट आएगा उससे बात कैसे करनी है, उससे इवन फी की कैसे डीलिंग्स करनी है, राइट? तो ये स्टूडेंट्स की हम सबकी we have to actually think about it and we have to perform something. हम लोगों को कॉन्फ्रेंसेस करके इसको जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको भी लाना बहुत जरूरी है. सो आई होप कि हम लोग इस पे सिर्फ बात ना करें बल्कि इस पे आगे और भी काम करें, एंड वी वुड एक्चुअली बी अ वॉइस फॉर द बार काउंसिल्स ताकि वो ये चीजें इनिशिएट करके आगे लेके आए. थैंक यू. Thank you very much, and sincere apologies. There was no intention of just keeping you at the last, and No, this is my yes, chance of redemption because I'm going to start the next conversation with you. So the next question is that a lot of times we all have heard that networking and connectivity and communication is really important in the whole legal fraternity. And sometimes I also feel when I talk to a senior lawyer or anybody and I mention some other person, if I'm talking to person A and I mention person B, they would know each other.
there is very close knitted community. But for women especially, I feel like, if I talk about myself, it's a very big hindrance of communicating and being connected to the people without going through the level of scrutiny and without actually realizing, okay, should I go for the internship? And there is also family pressure a lot. So how would you suggest, especially women, to go out there in the field and learn and communicate and make those connections? What I feel is that ये जो आप communication level की बात कर रही हैं, this has not been created by like this has created actually by men and women themselves, because ये चीज़ उनके अंदर I don't know it's cultural या फिर family pressures हैं, लेकिन उसकी वजह से बहुत सी जो खवातीन हैं इस profession में वो they feel inferior because this has been created. ये हमारा mindset जो है ये I don't know males ने start किया है या overall जो एक हमारी society है, because you know it's a tribal society, तो उसके अंदर एक concept है कि जो female हैं they are not supposed to talk out loud or something, right? Whether और ये चीज बाद में बहुत ज्यादा affect करती है, because if in this profession you have to actually change your identity to some extent, right? You have to be loud, you have to voice out your concerns, you have to become a man. So that is something which needs to stop, because you don't have to change your identity, right, to become something in any profession. So ये बहुत आपने important बात की, इसको खत्म करने के लिए एक और चीज बहुत वाजे में करना चाहूंगी कि जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स है उर्दू और इंग्लिश का, बहुत से जो अब इफ वी आर फ्रॉम प्रिविलेज बैकग्राउंड, इसमें हमारा मतलब इसको हमारी वी आर फॉर्चुनेट इनफ, बट इफ वी नो इंग्लिश एंड अगर हमें इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आता है, सो वी शुड नॉट फील सुपीरियर टू people who cannot speak English. ये जो चीज है इसको भी गैप को खत्म करना बहुत जरूरी है, that English उर्दू का, because if someone is foreign qualified, he speaks English, तो he is applauded by everyone. So ये चीज फीमेल के लिहाज से भी है और मेल के लिहाज से भी, and this needs to be corrected as well. ये भी खत्म करना हमारे बहुत जरूरी है, even in the legal profession, because आफ्टर ऑल व्हाट हम लोग को जो इक्वल जो जब तक फीमेल और मेल इक्वल नहीं आएंगे किसी प्लेटफॉर्म पे, आई डोंट थिंक इट कैन प्रोसीड फर्दर. Yeah, thank you very much. And about the English Urdu experience, I have actually experienced something quite different than feeling like superior talking in English. I have actually been bashed from a lot of lawyers कि नहीं आप उर्दू में बात क्या करें या आप उर्दू में मेरे से सवाल पूछें. So I Depends think on the forum. वो एक ट्रेंड अब शुरू हो रहा है where people are actually more inclined towards speaking in Urdu, and I think that's great, flourishing our own language. Like especially इस प्रोफेशन में you're more comfortable because majority ये ज़बान बोलती है, तो it's easier to communicate. Yeah, now I would like to ask the same question to Mr. Mohammad Qayyum, because I think he was talking in between, and I'm sorry if I interrupted him. I'm sorry. What I wanted to point out is that one, it totally utterly depends on the forum or the person you're talking to. So अगर आपने अच्छा वकील बनना है, अभी भी मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश और उर्दू दोनों के अंदर कर रहा हूँ. Your ability with the language, English के अंदर अगर आप हाई कोर्ट के अंदर हैं तो yes, if the judge is more comfortable in English, I'd switch to English. अगर सिविल कोर्ट में कर रहे हैं, आप अंग्रेजी बोलेंगे और मुंह टेढ़ा करके बोलेंगे तो you will be a misfit entirely there. रिकॉर्ड सारे का सारा उर्दू के अंदर है. दूसरी बात, ये मैडम ने ये कहा कि जी मर्द बनना पड़ता है वकालत के लिए, नॉट ट्रू एट ऑल. औरतों के लिए भी यहाँ पे प्रोफेशन में जगह है, लेकिन पंजाब में इतनी ज़्यादा नहीं है. कराची में, सिंध में अगर आप जाएं तो अब आई थिंक 35% of the lawyers you find at the high court are females and they're working at a excellent level, बहुत अच्छे लेवल के ऊपर. अनफॉर्चुनेटली लाहौर के अंदर थोड़ा बहुत ये है मामला. मोस्टली आई फाउंड कि ये उस बंदे के अंदर इनहेरेंट के ऊपर ही इनहेरेंट ये होता है उसके अंदर के और मर्द है औरत वगैरह के नहीं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. The lady who is I've got seven female associates in my office. We're around 18 overall. The lady who is in charge of my civil court, she is very very soft spoken, hijab चादर वगैरह लेती हैं, very very humble background, उर्दू के अंदर प्रिंसिपली बात करती हैं. और शुरू में जब मेरे चैम्बर में आई थी तो शायद मैं रखता ही ना, किसी ने जिद की तो मैंने उनको अपने चैम्बर में रखा, बट शी इम्प्रूव्ड हरसेल्फ. The problem with in this profession is you have to stick at it. I've even had a couple of females in my one female England से LLM करके आई थी.
शी शोड अप हेयर, सिविल कोड पसंद नहीं आया, पहली दफा एलएलएम करने के बाद वो सिविल कोड गई, उनको कोर्ट्स वगैरह पसंद नहीं आया, वकालत छोड़ के चली गई. So the thing is you have to stick at it. Gender doesn't matter that much. हाँ somewhat होता है, लेकिन ये थोड़ा सा आप overstate कर रहे हैं कि जी you have to be loud. Not at all. Loud people a lot of times don't get anywhere. Your ability to convince someone, whether you're male or female, उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट पे करता है, आपका एक्सप्रेशन कैसा है. और मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट humble background से the lady that I came across, she had a lot of other disadvantages as well, but वो मेरी civil court की team head करती है अब, and she does an excellent job. और अब फीमेल जजेस भी बेशुमार सिविल कोर्ट के अंदर आ चुके हुए हैं, मोर लॉयर्स, मोर सिविल जजेस देन लॉयर्स. बट थोड़ा सा मैं आपका मॉडरेट करूंगा मैडम को. कुरतलैन जो कह रही थी, मसला है, डेफिनेटली है औरतों के लिए इस प्रोफेशन के अंदर, बट आई वुड स्टिल वांट माय डॉटर टू कम इनटू दिस प्रोफेशन. I think there is space for her. हाँ वो थोड़ी बहुत privileged भी होगी, but अवामी टच होना वो मेल फीमेल वाली चीज नहीं. You have to have that अगर if you want to succeed in this profession. Otherwise corporate वकील बन के ही एक particular level के ऊपर आप रहेंगे, वहाँ पे औरतों का ज्यादा scope है. But if you want to be a litigator, वो अवामी टच आपको develop करना पड़ेगा. आप उसको कह दें कि मर्द बनना पड़ेगा. It's not more that. It's just that you just have to be outgoing. Clients अगर आपने पकड़ने हैं, अगर आप घर चली जाती हैं बाद में, तो क्लाइंट्स कहाँ से आपको बीच में मिलना है. इफ यू डोंट सोशलाइज, या इफ यू डोंट गो हेड, और इफ यू नॉट देयर इन द बार, और 15 और चीजें भी इस तरीके से हैं. प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट्स अलग. आई डोंट थिंक इट्स वेरी वेरी जेंडर स्पेसिफिक. There are a lot of female judges as well now civil court mein. Hopefully we'll get one soon in the Supreme Court as well. Yeah, but I think I would just like to have a little bit clarification on the point ऊंचा बोलने वाले पे. हम इसको लीगल फील्ड वाले तरीके से भी नहीं भी देखें, अगर हम उसको एक इंडिविजुअल और एक फैमिली लेवल पर देखें, तो बचपन से वैसे भी देयर इज अ टर्म कॉल्ड लेडी लाइक, that you have to be very ladylike, you have to speak, you have to be very soft spoken, you have to sit in a certain way. So I think there are generally very much stereotypes attached to female and gender minorities overall. I would like to ask the same question to Mr. Umar Ziauddin कि जो सर अहमद कय्यूम ने कहा कि बाहर निकलना, आउटगोइंग होना बहुत ज़रूरी होता है टू गेट क्लाइंट्स, और आपको सोशलाइज करना पड़ता है, और आपको एक कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी. तो वेयर एज जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जेंडर गैप है, कहीं ना कहीं फिल इन हो रहा है लेकिन अभी भी है, तो स्पेशली फीमेल लॉयर्स के लिए व्हाट वुड यू एडवाइस देम? जो एक हमारा ये कॉन्स्ट्रक्ट है लेडी लाइक का, वेरी क्विकली, इट्स अ कल्चरल रिस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट. इट्स नॉट इम्पोज्ड बाय द प्रोफेशन. Secondly, yes, it's important for you to network. It's important for you to have interpersonal skills. Saad's pointed out, but ये determinative नहीं है for you to succeed in this profession if you're a girl. आपके लिए if there's a young a female young law student who just entered into a profession और उसने एक बेहतरीन वकील बनना है, तो like Qayyum साहब said, you have to be persistent. Perseverance बड़ी important है. You have to be the best version of yourself. Improve every time you appear in a court. Improve every time you interact with the client. और क्लाइंट कॉन्फ्रेंसिंग की जहां तक बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है. हमने बहुत सारे कॉलीग्स को देखा जो अक्सर फैमिली के मैटर्स में एडवाइस करते हुए मैरिज काउंसलर बन जाते हैं. उनको पता नहीं चलता कि कहाँ रुकना है और कहाँ से आगे साइकोलॉजिस्ट का काम शुरू होता है और कहाँ तक वकील की एडवाइस है लॉ की. सो ये क्लाइंट कॉन्फ्रेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह की स्किल्स जो कि जिनका किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, you are gifted, you are privileged, all of that is fine. It can only take you so far. If you're not hardworking enough, you're not going to carry a day. ये 100 meters नहीं है, ये मैराथन है. आप you're going to practice this for the rest of your life, hopefully. तो आपको अपनी हार्ड वर्क जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है, या सबसे इम्पोर्टेंट फैसेट है for you to succeed at bar. Yeah, I really agree with it. I think कि वो कहते हैं कि एक इंसान अगर स्मार्ट हो तो वो इतना ज़्यादा
थ्रेट नहीं होता दूसरों के लिए, या फिर वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं होता जितना एक हार्ड वर्किंग इंसान होता है, बिकॉज दैट पर्सन विल नेवर स्टॉप. He or she will keep going and keep trying to be really good at whatever he or she is doing, right? I would like to ask the same question to Mr. Saad Bajwa. How can one improve their communication skills, keeping in consideration a little bit of the gender gap which is in this field? Okay, yes. This is an interesting question because here, it's this question has a mix of the gender question as well, and it also has this mix of how to improve a certain very valuable legal skill, which is communication. देखिए, पहली चीज मैं ये कहूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. कहीं कई लोग होते हैं जो जेन्युइनली टैलेंटेड होते हैं, कई लोग होते हैं जिनके पास टैलेंट इतना नहीं होता लेकिन उनके पास एबिलिटी टू वर्क हार्ड ज्यादा होती है. जब भी आपने किसी चीज को एक सक्सेसफुल लेवल पे लेके जाना होता है तो इट हैज टू बी अ मिक्स बिटवीन टैलेंट एंड हार्ड वर्क. ऐसे नहीं हो सकता कि एक फैसेट मिसिंग हो और दूसरा फैसेट बहुत ज्यादा हो, तो वो आप जो है ना वो उसकी फिर मैरिज जो है वो एक सक्सेसफुल लेवल तक नहीं जाती. तो आपका जो इनहेरेंट टैलेंट है कि जी अगर आपको अल्लाह ने अच्छी आवाज दी है या अल्लाह ने आपको एक अच्छा फ्लो दिया है, लेकिन इफ यू डोंट वर्क हार्ड ऑन इट तो वो 2-3 साल के बाद आपका लेवल उधर ही स्टे कर जाएगा. वो आप फिर 15-16 साल के बाद यू वोंट बी रिकॉग्नाइज्ड एज समबडी हु इज अ वेरी अकम्प्लिश्ड लिटिगेटर. तो इट हैज टू बी अ मैरिज बिटवीन द टू. दूसरी चीज ये है कि हाउ टू इम्प्रूव एज अ यंग प्रैक्टिशनर. यंग प्रैक्टिशनर के लिए जिस तरह कहा जाता है परसिस्टेंस, आपने ज्यादा से ज्यादा हेयरिंग्स करनी है अगर आपने अपने आप को लिटिगेटर बनाना है, एंड ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स की हेयरिंग्स करनी है. बिकॉज एट अ सर्टेन लेवल अगर आप 6 महीने 2 या 3 किस्म की हेयरिंग करते रहेंगे तो वो स्किल सेट आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, बिकॉज आप डिफरेंट जजेस के सामने अपीयर होंगे. लेकिन फिर अगर आप उसी पे अपने आप को ब्रेक लगा लेंगे कि जी ये स्टे एक्सपर्ट है या ये एडजर्मेंट एक्सपर्ट है, 6 months डाउन द लाइन आप टैग हो जाएंगे एंड वो इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती रहेंगी लेकिन यू वोंट बी एडिंग अप मोर टू योर ओन स्किल सेट. तो आपने अपने सीनियर्स के साथ इस तरह की इन्वॉल्वमेंट रखनी चाहिए कि जी ऑलवेज ईगर टू लर्न मोर, ऑलवेज ईगर टू एब्जॉर्ब मोर ऑफ द प्रोफेशन विद इन योरसेल्फ. अच्छा, अब इसमें जेंडर का एस्पेक्ट मैं टच अपॉन कर दूं, बिकॉज कई दफा कहा जाता है एंड आई वोंट गो इनटू द राइट्स एंड रॉन्ग्स ऑफ इट. ये तो एक आई थिंक on a certain level it's all very objective, but on a certain level it's all very subjective either as well. ये प्रोफेशन है जिसमें बोला जाता है, ठीक है. हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में बोलना ना बोलना इसके ऊपर there are certain constructs around it and at times it is gender specific. जिस तरह कहा जाता है कि जी certain people have to be एक gender has to be lady like, इसी तरह एक जेंडर ऐसा भी है जिसके ऊपर मर्दानगी का भी एक बहुत बड़ा ओवरहैंग है, ठीक है. अगर somebody is a man तो he is supposed to be loud and he is supposed to be outspoken. अगर कोई ऐसा नहीं है तो he might be perceived as somebody who's not fulfilling his gender role. इसके अंदर आई थिंक द बेस्ट अप्रोच मेरे ओपिनियन में, एंड यहाँ से मेरे से सीनियर्स बैठे हैं वो इसके ऊपर एड अपॉन भी करेंगे, मेरी अपने एक्सपीरियंस में यही है कि वन हैज टू बी ट्रू टू वन सेल्फ. अगर आप कुछ और बनने की कोशिश करेंगे जो आपकी नेचर के अगेंस्ट है तो आप अपना ही मजाक बनवाएंगे, बिकॉज वो आपकी नेचर के खिलाफ जाएगा. अगर आपकी नेचर एक आर्गुमेंटेटिव बंदे की है या ओपिनियनेटेड आदमी की है या खातून की है, तो उसमें आप विद इन द बाउंड्स ऑफ डिसेंसी एंड विद इन द बाउंड्स ऑफ बेसिक कर्टेसी आप उसके अंदर रह के अपना करियर बना भी सकते हैं, अपनी एक अच्छी प्रोफेशनल रेपुटेशन भी बना सकते हैं. अगर आपकी जरा क्वाइटर तबीयत है तो बहुत से ऐसे मैंने वकील देखे हैं, इवन लिटिगेटर्स भी देखे, जो कि तबीयतन खामोश तबीयत के होते हैं या कम बोलने वाले होते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बात बड़ी वजन की करते हैं. तो वो अपनी जो नेचर है उसके साथ ट्रू रह के, मतलब हर बंदा एतजाज एहसन साहब की एडवोकेसी नहीं कर सकता, हर बंदा मखदूम अली खान का स्टाइल भी अडॉप्ट नहीं कर सकता. आपको अपना स्टाइल फाइंड करना है 2-3 years डाउन द लाइन एंड आपने फिर उसके साथ स्टिक करना है. मैं इतना ही कहूंगा, अब आगे लेट्स सी के हमारे सीनियर्स क्या कहते हैं इसके बारे में. I would like to add something. Communication skills के हवाले से बात, communication is not only limited to actually speaking out. बहुत ज़रूरी है कि skills जो हैं उसके अंदर even जो like
a very small skill like actually how to write an email and reply to an email, ये भी हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है। जिस ये छोटी-छोटी चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर लॉयर कम्युनिकेशन के लिहाज से या ओवरऑल हाउ टू एक्चुअली ड्राफ्ट योर सीवी। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू हाइलाइट हियर कि स्किल्स के हवाले से बात हो रही है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जिसपे हमें काम करना चाहिए। जी well एक और बड़ा important question है, it is regarding the board politics and Mr. Qayyum साहब बिल्कुल perfect question person to answer that. So it is do you consider that it is it should be considered a skill and the young lawyers should indulge in the board politics? मतलब ये आपको नेटवर्किंग वगैरह में डेफिनेटली हेल्प तो करता है, बट शुड यंग लायर्स indulge in that as a do you consider it as a skill for these, or what are your remarks on that? यार बार पॉलिटिक्स के अंदर देखो, वकालत अगर करनी है तो वकालत करो, सियासत अगर करनी है तो सियासत करो, दोनों चीजें मिक्स नहीं करती। Now I've seen a lot of youngsters who try to mix the two, और अगर एक में कमी है तो उसको दूसरे से कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं क्लाइंट्स वगैरह हासिल करने के लिए। बट यंगस्टर्स को खास तौर पे अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है तो आपके लिए बहुत लाजमी है कि आप स्किल सेट के ऊपर उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, सियासत के ऊपर मत करें। और यंगस्टर्स के लिए तो ये, और एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट यंगस्टर्स, पहले 5 साल के अंदर, पहले 5 साल में आप लोगों के इलेक्शन सिर्फ लड़ सकते हैं, आप यू आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू, आपको वो यू आर नॉट एलिजिबल टू कंटेस्ट फॉर ऑफिसेज एनीवेज। तो काम के ऊपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम यहाँ पे यंगस्टर्स के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती करते हैं उनको अपने इलेक्शंस लड़ने के लिए, और मैंने भी अपने इलेक्शन के लिए यंगस्टर्स को, मेरे दफ्तर में प्रोफेशनल्स उनको भी इस्तेमाल करते हैं, देर लाइक कैनन फॉडर, आप उनको इस्तेमाल करते हैं, बैज लगाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग वगैरह जो उनके लिए एक्चुअली चीज करने की जरूरत है वो नहीं करते। यंगस्टर्स शुड डेफिनेटली ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। हाँ ठीक है, उनका इंटरेस्ट है उसके अंदर करके कि वो उन बंदों को इलेक्ट करें जो कि उनके लिए कोई काम कर सके या उनको रिप्रेजेंट प्रॉपर्ली कर सके उसके लिए। बट आई वुड स्ट्रिक्टली से पाकिस्तान बार काउंसिल ने तो भी चंद दिन पहले जाके 2 साल का इनके ऊपर बैन लगा दिया था यंगस्टर्स के ऊपर, विच आई अपोज्ड। बट बैन ये लगा दिया था कि 2 साल में वो पहले 2 साल में वोट ही नहीं डाल सकेंगे। वोटिंग इज योर फंडामेंटल राइट। पॉलिटिक्स सारा सुबह दोपहर शाम उसी की तरफ आपके ऊपर काम करना, वो आई वुड नॉट अग्री विद। और अगर आपको पॉलिटिक्स की वजह से मुकदमे मिल रहे हैं तो आई डोंट थिंक यूर लाइकली टू बी, फिर आप पॉलिटिक्स ही करेंगे, फिर आप प्रेशराइज ही करेंगे, और वो जो नेगेटिव वाली चीजें वगैरह होती है फिर आपके वकालत वाले स्किल्स नहीं डेवलप होंगे, और वो एक लेवल के ऊपर, एक स्टेज के ऊपर जाके आप रुक जाते हैं। सो माय स्ट्रॉन्ग सजेशन would be you need to be aware of it। बिल्कुल बर्गर होके चैम्बर के अंदर नहीं बैठना चाहिए, बिकॉज इट्स योर डेस्टिनी, इट्स योर रिक्वायरमेंट। और मैं यंगस्टर्स का ही भी कैंडिडेट था, मैं ये मुझे बेशुमार वोट इस दफा इसीलिए मिले और यंगस्टर्स के इसीलिए मिले क्योंकि मैं उनकी ही बात करता था कि यार तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए काम करना है। सो थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, और बार में रेगुलरली आओ, बार का हिस्सा बनो, लोगों के सामने नजर आओ, झाका खुले, बोलो, जुबान की जो गिरा है वो रुके, जजेस के बारे में बात करो, जजेस के बारे में पता चले, दोस्तों ने जो 15 आज केसेस करें उसके बारे में पता करें। तो दैट्स नॉट बीइंग पॉलिटिकल, दैट्स बीइंग सोशल, एंड दैट्स बीइंग एन एक्टिव लॉयर। बार का हिस्सा होना वो डेफिनेटली करना चाहिए, मगर सियासत नहीं करनी चाहिए कि जी सिर्फ ओहदों के लिए पीछे भागते रहो या नारे वगैरह लगाते रहो या लड़ाई मार कुटाई के अंदर लगे रहो। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह मेरा एक और क्वेश्चन ये भी है कि शुड यंग लॉयर्स जो है मोस्टली जो होते हैं एक चैम्बर को ज्वाइन कर लेते हैं और एक जो है वो दे शुड सीक मेंटोर। सो हाउ डू यू थिंक दैट फाइंडिंग अ मेंटोर इज वेरी मच हेल्पफुल टू फॉर देयर लीगल स्किल्स एज वेल? तो मतलब आई वुड स्टार्ट विद मिस्टर मारजाउद्दीन। could you mean you are heading law firms and in litigation for a lot of time? How do you see Yeah, that? so I'm not, thank you, I'm not qualified as a mentor as yet. Peter the Great कहता था, myself a teacher, myself a pupil and I seek teachers. बहुत कम लोग हैं हमारे प्रोफेशंस में जो कि अपने स्टूडेंट्स को, यंग एसोसिएट्स को मेंटोर करते हैं। और वो जो पहले चंद साल होते हैं वो बड़े बड़े सिग्निफिकेंट ईयर्स होते हैं, मेक और ब्रेक टाइम होता है किसी भी यंग वकील के लिए। तो अच्छा उस्ताद होना, और देखिए अच्छा उस्ताद सिर्फ वकील नहीं हो सकता, अगर आप एक अच्छे बेंच के आगे, एक अच्छे जज के आगे पेश होते हैं तो वो भी आपको एलिवेट करता है एज अ लॉयर। हर दफा उसके आगे पेश होते हुए इम्प्रूव कर रहे हो। तो मेंटोर
करना कोई बहुत खुशकिस्मत होगा कि उसको कोई एक अच्छा उस्ताद मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो यंग लॉयर्स जो हैं उनको वो सिर्फ अपनी कैंपेन के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बाहर पॉलिटिक्स के लिए, और वो बेचारे एहतरामन जो हैं उनके लिए सुबह शाम वोट मांगते रहते हैं, उनका वकालत पे ध्यान कम होता है. There's a reason why this profession is called a jealous mistress. It needs your time, it needs your energy, especially in the formative years. Yes, and same question to the Ms. Kuratulan also. I mean, you also have been teaching. You are also a lecturer. How do you see that this is very much important for the student, even during their studies as well, to seek a mentor for developing their skills? I think डेफिनेटली मेंटोर तो आपका इवन कॉलेज लाइफ से आपके टीचर्स होते हैं, और बाद में आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, those people are supposed to be your mentors, and if they're exploiting you to, you know, because 1-2 साल, इवन 3-4 साल जो आप सीख रहे होते हैं उसके ड्यूरिंग, अगर if they are actually exploiting you to for their own benefits, then definitely it is a wrong thing. I'm a very non-political person, but still I would like to highlight this कि अगर even जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो ये नहीं चाह रहे और उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, उनको असलियत नहीं दिखाई जा रही कि जो उनके साल काम करने के सीखने के हैं, और वो अगर पॉलिटिक्स में मतलब किसी भी तरह इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आई डेफिनेटली एग्री कि काफी जो है इस चीज को भी स्टॉप करना चाहिए. एंड रिसेंटली ये चीज काफी ज्यादा हाईलाइट भी हुई थी, लेकिन और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि ये चीज जो है वो कॉलेज लेवल से इस चीज की अवेयरनेस देना कि आपने आगे प्रैक्टिस में क्या करना है, और ऐसी वर्कशॉप्स कराना, ये आपकी स्टार्ट जो है वो आपके यूनिवर्सिटी लेवल से ही होनी चाहिए. बिकॉज व्हेन एनी स्टूडेंट कम्स, वो जो आके जो इन्वायरमेंट देखता है कोर्ट्स का, स्पेशली फ्रॉम द सिविल कोर्ट, तो वो एक शॉक होता है शुरू में. आहिस्ता आहिस्ता यू अडेप्ट टू दैट, बट ये सारा कुछ दिखाना और सिखाना जो है वो कॉलेजेस की भी जिम्मेदारी, और ये अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे. मेजॉरिटी जो स्पेशली बच्चे एक्सटर्नल प्रोग्राम से आते हैं उनके लिए तो काफी ज्यादा जो है ये शॉक होता है कि जब वो आके इन्वायरमेंट देखते हैं कोर्ट्स का, स्पेशली सिविल कोर्ट्स का, बिकॉज ज्यादा जो है वो एम्फेसिस इसी पॉलिटिक्स और इन चीजों पे होता है, रादर देन कि उनको बच्चों को स्किल्स सिखाएं, उनको अच्छा लॉयर बनाएं. तो दिस नीड्स टू स्टॉप. Yeah, thank you very much. I think I would like Can to I ask the same add question. something to this, please? Yeah, sure. आप पहले से साथ से पहले बात कर लें, करना चाह रहे हैं. Can I add something? देखिए, ये emphasis on a mentor, I think यहाँ पे बहुत ज़्यादा misplaced है, because a mentor आपको सिखाता नहीं. Once again I'm telling you, it's about skills वगैरह, it's about opportunity. वो आपका मेंटर या व्हाट अ यंगस्टर शुड बी सीकिंग आउट इज अ चेंबर जहां पे दिन में 18 केसेस लगे और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले. यहाँ पे किसी के पास कोई टाइम नहीं है कि आपको बिठा के कहे कि बेटा वकालत इस तरीके से करते हैं. आई गिव यू, मेरे वालिद साहब इज अ लेजेंड इन द प्रोफेशन, उन्होंने मुझे कभी बैठ के मेंटरिंग वगैरह नहीं की. सो फॉर समवन टू गो अहेड एंड एक्सपेक्ट कि जी मेंटर हमें होगा और वो मुझे अच्छा वकील वगैरह बनवा देगा, नो, इट्स ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटी एंड द सर्कमस्टांसेस, और आपको सराउंडिंग वगैरह क्या मिलती है. मेहनत आपने खुद ही करनी है, इम्प्रूव आपने खुद ही करना है. वो आप पे अगर प्रेशर डालता है, काम आपको कोई बंदा देता है, दैट इज द बेस्ट मेंटर. मगर अगर ये हमारा ख्याल है कि मेंटर का वो मतलब है जो कहेगा बेटा बैठो इस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं, ये यूं नहीं करना, ये वो नहीं करना, यहाँ पे किसी के पास कोई टाइम नहीं है, ना होना है. और यंगस्टर्स को भी वो बड़े नाम और ये जो बड़े चेंबर्स वगैरह देखते हुए जाते हैं कि जी हमें वहां पे बड़ा जबरदस्त मेंटर मिलेगा. एतजाज साहब या मलिक कयूम साहब जो सुप्रीम कोर्ट के, वो अपने साथ ज्यादती कर रहे होते हैं. बिकॉज अगर मलिक कयूम साहब के साथ आपने बैठ के सुप्रीम कोर्ट का काम करते हुए उनको देख लिया, उनकी फाइलें उठा के कर लिया, तो आप तो अभी इब्तदा के अंदर वकील ही नहीं अभी आप बने, तो आपको फायदा क्या हुआ. फोकस बंदे का मेंटर के ऊपर नहीं होना चाहिए, इब्तदा के अंदर होना चाहिए कि उसको सबसे ज्यादा काम और एक्सपोजर कहाँ पे मिलता है और उस नौइयत का काम कहाँ पे मिलता है जो काम उसको पहले 5 साल में मिल सकता है.
Now if he goes ahead and starts becoming a corporate वकील और 5 साल का जो काम उसको 5 साल के बाद मिलेगा या हाई कोर्ट के लेवल पे मिलेगा, सिविल कोर्ट का भी अभी लाइसेंस मिला है, वो काम वो करना सीखता नहीं है और एक मेंटर के पीछे जाते जाते ही एंड्स अप इन अ बिग नेम चेम्बर। और बेशुमार बंदों के साथ ये ट्रेजेडी है कि शुरू में तो मेरे नजदीक तो ये करना चाहिए, मेंटर को ना देखें, आप वो देखें कि इस बंदे के पास काम है, आप उसके साथ उसको कहें काम करेंगे, 6 महीने सिविल कोर्ट में लगाएं, 6 महीने सेशन कोर्ट में ट्रायल वगैरह का काम करें फौजदारी का। दैट विल मेक यू अ लॉयर। नो मेंटर इज गोइंग टू गो अहेड एंड, हाँ मेंटर इस लिहाज पे होने चाहिए इंस्पायर करने के लिए या कोई सिस्टम को ठीक करने वगैरह के लिए, उस लेवल के ऊपर बंदे को काम करना चाहिए, मगर मार्केट में कोई मेंटर नहीं अवेलेबल। और मेरे पास बहुत बड़े मेंटर थे, उन्होंने मुझ पे ये एहसान किया कि हमेशा जब भी कोई मैंने उनसे सवाल किया उन्होंने कहा जाओ खुद देखो, खुद करो। और उन्होंने सबसे बड़ा वालिद साहब का रहम ही मेरे ऊपर ये था कि मुझे उन्होंने शहजादा नहीं बनने दिया, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे खुद किताब खोलो, सवाल का जवाब तो उनको हमेशा पता होता है। सो डोंट लुक फॉर मेंटर्स इन दिस प्रोफेशन, दैट्स नॉट व्हाट इट्स अबाउट एट ऑल। और अगर एतजाज साहब आपके मेंटर हैं या कोई और आपके मेंटर हैं तो एतजाज साहब को हराएंगे कैसे अगले दिन जाके मुकदमे के अंदर? you're as good as someone else. So मेरा थोड़ा, I'm sorry, मेरा मौक़िफ़ इसके ऊपर थोड़ा सा फर्क था, so I thought I'd disagree. No, thank you very much. And I think everybody would agree that Sir Ahmed Qayyum wants everybody to be a man of steel. That you are no good. You're like you're best. So you do you, and everybody else. Like you don't have to follow somebody else. You have to pave your own path. And I think that's really true because अगर आप किसी से जाके सवाल पूछ रहे हैं, अगर वो आपको बता देते हैं, तो फिर आपकी अपनी लर्निंग, आपकी अपनी ग्रोथ, आपके अपने और जो 5-6 सवाल आपको आएंगे वो टेक्स्ट पढ़ के वो रह जाएंगे. फिर you will just understand and you will be on the favors of somebody else. So thank you very much. I hope that सारे young lawyers man of steel या woman of steel बनकर इस profession में आए. And lastly, I would just like everybody to give some fruitful advice to our young lawyers or to our young graduates जो अभी profession में enter हो रहे हैं. Just in a nutshell कि what should they look for or what should they work upon to be a better litigator or to be a better in drafting research and everything. I would start with ready. Who are we starting with? Whoever's ready. I firstly Okay. started with, so I don't want to get into that trouble again. ladies first actually, उनको उन्होंने फिर कंप्लीट करना. Ma'am Kurut. Madam Kuratlan. Ma'am, you have to unmute yourself if you don't have any issues. Yeah, I'm having an issue with my mic, so I would like Mr. Ahmed Qayyum to start. अच्छा, देखिए, the question that you've asked कि पहले 5 साल में क्या करना है, I've done a number of videos precisely on that on YouTube. तो पहले तो वो देखें, it's long winded ये argument कैसे करना है, किस तरीके से प्रोफेशन में पहले 5 साल कैसे मैनेज करना है. I've specifically done videos on that. अगर आप YouTube पे मेरे चैनल पे चेक कर लें. यहाँ पे in a nutshell what I wanted to point out is you, जैसे आप कह रही थी और बिल्कुल you work on you. A profession is absolutely brilliant. It gives you a lot, but only if you work hard at it. Always try to improve. हर बंदे के पास पहली दफा गलती करने की ऑप्शन है. I mean, आपको सिस्टम में से तो कोई सिखा नहीं रहा, मगर don't repeat that mistake again. अंग्रेजी के अंदर अगर आई मीन वर्क एट इट, इम्प्रूव योर स्किल्स. अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी अखबार पढ़ें, लिखें एंड वन डे you'll start writing well. So the only way, किसी जिंदगी में किसी चीज का स्किल करने के लिए वो 10,000 आवर्स वाला बीच में थ्योरी है या कुछ इस तरीके से कि यू बिकम ब्रिलियंट एट अ पर्टिकुलर थिंग जस्ट बाय डूइंग इट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्किल्स. इट्स अ स्किल्स बेस्ड प्रोफेशन. नॉलेज का भी इतना ज्यादा नहीं, करोगे तो होगा. डर के अगर पीछे बैठे रहे, या दिस इज नॉट अ प्रोफेशन फॉर वॉल फ्लावर्स. जो मेहनत करके, लाउड पीपल नहीं, बट आपको अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे, no one's going to bother with you. So make an effort with this profession. This is a brilliant profession and I'm sure you guys will fall in love with it. I mean, I've given my life to it, so बहुत जबरदस्त. Thank you very much. And yes, whoever's watching this live right now, young lawyers or anybody who just wants to um, learn कि आप शुरू में क्या करते हैं, go and watch Sir Ahmed Qayyum's videos. He produces amazing content on YouTube. And my
if Ma'am Kurutulain Baloch, Ma'am Kurutulain Nasir, if your technical issue has been resolved, can you please give us an advice? Yes, can you hear me now? Yeah, we can. Okay. ओके लीगल स्किल्स के हवाले से मैं जो एंड पे लाइक व्हाट आई वुड लाइक टू एडवाइस स्टूडेंट्स इज दैट ये जो काम है लीगल स्किल्स का ये स्टार्ट हुआ था 2010 से लाइक जस्टिस मंसूर शाह के टाइप से एंड देन साकिब निसार साहब ने इस पे काम किया है अब सारे हम लोग मिलके काम कर रहे हैं तो बात ये है कि इस जो लीगल स्किल्स हैं वो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पे हमें वी नीड टू वर्क ऑन एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी से ये मैं बार बार रिपीट करी उस टाइम से ये बताना कि एनवायरनमेंट क्या है कोर्ट्स का कैसे प्रैक्टिस होती है उनको ये चीजें सिखाना इट शुड बी पार्ट ऑफ देयर सिलेबस इन द लॉ स्कूल्स दिस कम्युनिकेशन एडवोकेसी ड्राफ्टिंग आप लोग माशाल्लाह सारे बैरिस्टर्स हैं तो आई थिंक हम लोग को मिलके ये जो काम है ये अगर हम लॉ स्कूल्स के अंदर यही चीजें सिखाएंगे पाकिस्तान में कोई टैलेंट या किसी चीज की कमी नहीं है अगर हम यही बच्चों को वहां सिखाएंगे तो दे वो जो भी वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं प्रैक्टिस में वो बहुत ज्यादा जो है कम हो जाएगी और इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे आपने मेंशन किया ड्राफ्टिंग क्लाइंट कॉन्फ्रेंसिंग आर्टिकल राइटिंग इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो हम लोगों ने बच्चों को सिखानी है और ये हमें लॉ स्कूल से ही आएंगी अगर बार काउंसिल इस चीज की इनिशिएटिव नहीं ले रहा या ले रहा है बिकॉज केल हमने खटाना लॉ चैम्बर की तरफ से अभी वी हैव आल्सो हम लोग इस चीज की जो 2018 की जजमेंट है उसको इम्प्लीमेंट भी सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस जो नेक्स्ट हियरिंग है वो भी नेक्स्ट मंथ में है सो वी वांट कि ये प्रैक्टिकल स्किल्स जो है ये किसी तरह दे बिकम पार्ट ऑफ द सिलेबस और दे बिकम मैंडेटरी फॉर द लॉयर्स यंग लॉयर्स स्पेशली ताकि वो जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं फीमेल्स हैं या मेल हैं वो इस चीज को खत्म हो जाए पाकिस्तान से और इसके एंड पे मैं ये कहूंगी जो भी बच्चा इस प्रोफेशन में आ रहा है वी आर ऑल देयर फॉर यू फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हम लोग आपके सीनियर्स हैं मेंटोर्स हैं एंड वी कैन ऑलवेज गाइड यू एंड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म जो आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया इससे आई एम श्योर बिकॉज ऑफ द कोविड जो बच्चे घर बैठे हैं उसको देख के आई एम श्योर दे आर गेटिंग इंकरेजमेंट और वो मोटिवेट हो रहे हैं जो इवन आजकल जो भी जिनकी सिचुएशन अच्छी नहीं भी है वो भी इसी से काफी ज्यादा मोटिवेट होंगे वी आर देयर टू हेल्प देम आउट Yeah, thank you very much and best of luck with your case. I hope it produces the desired results and I'm sure कि काफी लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा including me. So so the next person that I would like to speak on just give us an advice to the young lawyers and the young graduates would be Marziauddin. My parting shot would be you will love this profession. This is one of the only professions that embraces all kinds of people from all walks of life. It embraces the socially awkward, it embraces the outgoing. You only need to love what you do. Rest will follow. And see you at the courts. Inshallah. Thank you very much. Mr. Saad Bajwa, I think you were the person who's left. Ji, thank you. Okay, this profession, ये एक मेरिटोक्रेटिक प्रोफेशन है एट इट्स कोर. आप चाहे जिस भी बैकग्राउंड से आए हुए हो, आप चाहे जिस भी लेवल ऑफ प्रिविलेज से आए हुए हो, at a certain level, after a certain number of years in the profession, you will only be judged according to your professional ability and your professional reputation. इस profession ने, as उमर ज़ियाउद्दीन साहब said, कि कई ऐसे लोगों को भी बहुत ऊपर तक लेके चला गया purely because of their hard work and their persistence, जो कि एक नॉन लीगल बैकग्राउंड से आए हुए हों. और ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप जितनी भी अपनी एफर्ट डालेंगे, जितना अपना आप कमिटमेंट शो करेंगे और रेजिलियंस शो करेंगे, इट विल रिवॉर्ड यू एट द एंड. तो पहली चीज ये है. दूसरी चीज ये कि वन हैज टू बी अक्रेडिटेड टू वंस प्रोफेशन. ये ऐसा प्रोफेशन है जिसके प्रैक्टिशनर्स ने इस मुल्क को बनाया और अभी भी इस मुल्क के अंदर लीगल प्रैक्टिशनर्स की बहुत कंट्रीब्यूशन है. एंड वन हैज टू बी अक्रेडिटेड टू वंस प्रोफेशन. आपको किसी भी चीज के अंदर आपने एंटर किया है
तो आपको इतनी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स कि मैंने इसके अंदर कुछ ऐड किया है, क्योंकि ये प्रोफेशन आपको दे भी बहुत कुछ रहा है, तो आपने कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐड किया है। लास्टली मेंटरिंग के ऊपर बात हुई थी, आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड समथिंग। इसमें बिल्कुल सही बात कही है मोहम्मद कयूम साहब ने कि जी इसमें किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के एक एक चीज सही तरह सिखाई जाए। इसमें ये होता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से या ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ काम करना चाहिए। मतलब अगर आप एक चेंबर के कॉन्टेक्स्ट में हुए, तो अगर चेंबर में 5 या 6 पार्टनर हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सबके साथ वक्तन फवक्तन टाइम गुजारें, सबकी हेयरिंग्स पे जाएं, सबको कभी कभी शेडो करें, बिकॉज उससे ये होएगा कि एक तो आप डिफरेंट एरियाज ऑफ लॉ के अंदर थोड़ी थोड़ी अपने अंदर एक्सपर्टीज ऐड कर रहे होंगे, और दूसरा ये कि आप हर एक से कुछ ना कुछ डिफरेंट सीख रहे होंगे। मैंने अपनी 6-7 साल के लीगल प्रोफेशन में अभी तक जो जितने मेरे रहे सुपीरियर्स रहे या जो भी मेरे सीनियर्स रहे, सबसे कुछ ना कुछ डिफरेंट सीखा है। किसी से मैंने बिजनेस डेवलपमेंट सीखा है कि जी नए से नए क्लाइंट किस तरह लेके आते हैं, किसी से मैंने सीखा है कि डिफिकल्ट क्लाइंट को किस तरह मैनेज किया जाता है, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस को किस तरह मैनेज किया जाता है। किसी से मैंने देखा है कि एक जज जो कि डिफिकल्ट हो जाते हैं, कभी कभी एट टाइम्स जज भी डिफिकल्ट हो जाते हैं, उसको किस तरह हैंडल करना होता है। तो सबसे कुछ ना कुछ डिफरेंट सीखा है। तो अगर आप मेंटर वाले उस फिलोसफी पे चले जाएं कि जी मेरा सिर्फ यही मेंटर है और मैंने यही बनना है, तो आप अपनी थोड़ी अपनी जो ग्रोथ है उसको कटेल करें। तो मैं यही कहना चाहूंगा, एंड थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए, एंड आई फील प्रिविलेज के इतने जबरदस्त प्रैक्टिशनर्स के साथ मुझे भी मौका मिला आज बात करने का। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for being here. I would like to thank you, all ma'am. the guests for being here and for giving us such valuable ideas and for sharing their thoughts. And I think अगर मैं सारों की बात का एक nutshell निकालूं about the advice is that you do you and just work on yourself. You guys can have inspirations, but at the end of the day, आपने अपने से ही बेहतर होना है. Like you are, आप अपना ही competition होते हैं. The best way to grow is that you have to be better than what you were yesterday. So thank you very much, and yeah, I think that was a very lovely session. Pleasure, madam. Thank you. Pleasure. Thank you very much. Thank you.